Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। You all completed your task, your recent tasks, your all the things. Please tell me. Asma, your all the task is completed because why I'm asking again and again because we want to start the JavaScript. So I am waiting for your task. If you have any confusion in your previous task, you tell me if you have any confusions because when you tell me, then I resolve your problems. So please tell me. Teacher, for me, I have a little problem. I want to ask, like, for example, I want to make a sidebar. I Okay. already make it, but I just want to ask you maybe I could have a better solving way. Okay. So in Bootstrap, we have the property called the of canvas. That's the one that when you click the button, we get a sidebar. Mm-hmm. So how can I create a sidebar from the beginning? Like because what I solved, I create myself with the custom CSS and HTML. So like, Okay. is there a better way that I can make a sidebar without just Okay. coding from scratch Okay. HTML Sure. and CSS? Sure. I am tell you. You just simple method of that is you just go to the Bootstrap documentations. Okay. From Bootstrap documentation, you just or you just search Bootstrap sidebar. Okay. You just copy the Bootstrap sidebar and use in your project. Okay. In many themes we have Bootstrap by built-in. Okay. So you just simple way of that, you should please search on Google about sidebar, Bootstrap sidebar. Okay. It's give you its I code. did that. You did it. I You did I it. used WC School, yeah, and the Bootstrap website. I didn't get the sidebar directly. There is Okay. just of Canvas. Sure. We must use the button. Just Yeah. just I just Or maybe showing can I share the show screen? Or just a minute. I am searching for you. okay. Here I am showing your screen now. Just a minute, because on W3 schools and we have another documentation of sidebars. This is showing to you. You just simply write on the Google Bootstrap sidebar. So this is the sidebar of Bootstrap. Here we have different things in that, like we have this, you can say Bootstrap sidebar. Okay. So if we move the read more, we have these things. So first a minute, it is just a sidebar, and we have the code for that here. I think in example Bootstrap, this is one, this one. We have these sidebars. Okay. So we can use it from here. We have nav bars also. Okay. So this, we have drop downs as well. View navbar docs. We have coding here properly, each and everything provided by the Bootstrap. This is the Bootstrap documentation. You just simply search Bootstrap sidebar. This is Bootstrap. Okay.
Now I can tell you about that. This is examples. There we have headers, we have heroes, we have sidebars. Here we have sidebar. Just a minute. Examples. Here we have just we have custom. These are the custom components: pricing, checkout, checklists. These are the dashboards. We have navbar bottoms. Here we have all the things. Okay, Okay, I okay. think I didn't check on the Y- example samples. I yes, was just using the document yes, features. yes. Yeah, this is a documentation. You just properly do all the things from here. Okay, here are many things. Okay, I sharing the link with you in the group as well. Okay, or here in the chat of Google Meet. You just copy that. You just use all the things from here to make your work easier. Okay, I'm sharing you in the group as well. I'm shared. Okay. So by this we do all the things. I am shared you the link in the group. You just use the bootstrap things from here. Okay. So if you have any other problem, please tell me. Lareb, you have any problem, please discuss it with me. I tell you the solution of that problems. Savira, I am discussing about the bootstrap documentation, how we use the bootstrap things like their headers, their sidebars. So I just simply share the link of bootstrap where you use all the things very simply and very you can say easily. So this is a bootstrap link. If you want to implement the things in your project, uh, you should use from here. Okay, Lareb. Shiza Fatma, you have any problem, please tell me. Sir, I have something else to ask. Yes, please ask me. So, for example, like yesterday, I tried it like to make my the task to make it more well by increasing some features. So, for example, I want to make that sidebar for the very smaller devices to have a hamburger menu. I struggled on making the sidebar to like Okay. open well when I have smaller devices. What can I do? Like I want the sidebar to not Okay. disappear, to Okay. have a I understand for this. menu I can see. understand. You Yeah. just simply implement the you can say you have the link in I share the link with you. This is the one link, and in this link after that if you open in it on mobile, you just simply use media queries. Okay, media queries like screen wise we check their responsiveness. Okay, you just use simply media queries in this in their css custom css file. Okay, and do the custom css on that, like on this its parent class. Okay, so it's this problem is reduced by using media queries. Okay. Okay, I understand. Okay, I will try that. Rubab, if you have any problem please tell me, or you should clear all the things, please tell me. Okay, I would ask something else. Okay, please ask. Please ask, no problem. Uh, okay, so as you show, like we have sidebars that you have shown the samples, I saw them. So how about, for example, I need to put a nav bar on the top and the sidebar already, it is from the top to the bottom of the page. How can I adjust that so that the nav bar should stay on the top and then still the sidebar to stay below of the sidebar while it was Okay, already a full page? you just simply use for an if you want to say we use both things on on a same page, like navbar on the top and sidebar on the left side. Okay, so at the same time we use both things by using
hamburg menu, as well we use for navbar. For navbar we use sticky. Okay, it's a sticky means it stick on the page. Okay, and after for your sidebar you just make a menu type thing on navbar. You just click on that icon, it just open your sidebar like drawer and your navbar. You just combine it on a single page. Means Rubab, tell me what are you saying? I didn't understand your question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं रुबा बात कर रही हूँ। जी जी बताएं। तो मैंने ना ये पूछना था कि लाइक देखें यहाँ पर भी हम लोग कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं एक हम्म हिसाब से ना। हम्म जैसे ये स्ट्रैप के सारे लिंक्स हैं और इधर भी हम्म सारा कोड हमारा कॉपी पेस्ट ही है, तो फिर एआई क्यों रिस्ट्रिक्टेड होता है हमें एआई देखो, उसमें? ये बूटस्ट्रैप हम क्यों यूज़ करते हैं, मुझे आप ये बताओ पहले। बूटस्ट्रैप का मकसद क्या है? क्योंकि हमारे पास बिल्ट इन वो सारी चीजें पड़ी होती है ना, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी बूटस्ट्रैप रेडीमेड चीजें होती हैं। बूटस्ट्रैप की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपके कंपनीज के अंदर जितने भी बड़े डेवलपर सारे सारे यूज़ करते हैं, यही यूज़ होता है वहाँ पे। ये नहीं है कि आपको एआई की रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाती है। एआई रिस्ट्रिक्टेड इसलिए है कि एआई से लॉजिक बनवाते हैं हम लोग। हमें डिज़ाइनिंग का इतना मसला नहीं होता, डिज़ाइनिंग तो हर कोई कर लेता है। मेनली लॉजिक के ऊपर प्रॉब्लम आती है। अब आप मेरी बात समझिए। जी ठीक ठीक है। है। मेनली हम लोग ये जो बूटस्ट्रैप होती है, इस पे ये नहीं होता कि आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। बूटस्ट्रैप को आपको कोई चीज़ नहीं आती, यहाँ पे आपके पास 10 साल वाला डेवलपर भी होगा, बूटस्ट्रैप वहीं से यूज़ करेगा। ये नहीं है कि उसको सारा कुछ ही आता है तो वो यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है। बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन क्यों बनाएंगे, ये प्रॉपर एक साइड डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट करके यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें पता हो कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। वो आप जब उसको बार बार यूज़ करते हो तो डिज़ाइनिंग के ऊपर, इसीलिए अभी स्टार्ट में इतना फोकस हो रहा है ताकि आपका डिज़ाइन पे हाथ थोड़ा सेट हो जाए, आपको चीज़ों को पता हो। एटलीस्ट आपने कॉपी करके भी कोई चीज़ यूज़ की तो आपको पता हो, आप उसमें चेंजिंग कर रहे हो, कोई चीज़ टास्क कैसे परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको उस पर ग्रिप हो जाए। ठीक है। मेनली एआई रिस्ट्रिक्ट किस लिए की जाती है? ताकि आप लॉजिक पे थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो, लॉजिकली इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट खुद से करो। मेनली उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। जी ठीक है सर। ठीक हो गया। तो मेनली उस चीज़ को हम इस तरह से करते हैं, बाकी ऐसा मसला नहीं होता, डिज़ाइनिंग का कोई इशू नहीं है। मेनली हमारा ऐसी चीज़ का मसला होता है कि लॉजिक को आप लेके चलें। और जो आपका बूटस्ट्रैप का हरम, जो आपका बूटस्ट्रैप का मसला आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो अपना उसका लिंक है ना, ऊपर हेडर में पेस्ट करें और उसकी क्लासेस जो सी हैं उसको प्रॉपर से यूज़ करें। वो आप वहाँ से यूज़ करेंगे, कॉपी पेस्ट में इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है। कॉपी पेस्ट के अलावा अगर आप कर रही हैं फिर इशू आएगा। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रही हैं फिर भी इशू आ रहा है, फिर तो समझ नहीं आई क्या मसला है, उसको दिखाएं क्या इशू आ रहा है, देख लेते हैं उसको।
बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये है कि हम लोग वी आर मूविंग टूवर्ड्स द जावास्क्रिप्ट. ओके, you gradually start to learn the JavaScript, starting from their loops as well and their data types. Okay, so we will moving towards the JS by slowly and gradually, not fast. Okay, so other students, please complete your task as well. If you have any problem in that, if you have times issue, some students discussed with me about their papers, about their things, so they will manage with us in after their papers as well. So they just complete their task, and in their papers, in their exam days, they just give some time to this their task and as well as JavaScript. Okay, so we are starting the JavaScript inshallah. Okay, in the next class. Before that, you should just revise some topics of the JavaScript. Okay, and if you have any, I just said if you have any problem in your task, you just let me know. We will resolve it. No problem. Okay. So how many students completed their task completely? Please tell me. Asma, you should completed your all the tasks that I give you. Okay, Savira, yes, your all tasks are completed. Rubab, your all tasks are completed. ठीक है. आपका लास्ट टास्क रह गया, कोई मसला नहीं, आप इसको करके दें. ठीक है. सबा, योर ऑल द टास्क आर कंप्लीटेड. लास्ट वाला रहता है. ठीक है. शीज़ा फातिमा आपके भी हैं, और कशमाला बशारत आपके. ठीक है. फर्स्ट टास्क इज़ नॉट कंप्लीटेड. ठीक है. बाकी आपके कंप्लीट है सारे, ऑल द टास्क. ठीक है. शीज़ा जाहिद का तो पता लग गया. ठीक है. और साइका आपके भी सारे कंप्लीट आई थिंक. यू कंप्लीटेड योर ऑल द टास्क. जी सर कंप्लीट है. जी जी, आपके ऑल्सो सर कंप्लीट. कंप्लीट है, ओके, लेकिन इम्प्रूव कर रही हूँ लास्ट वाले पे. और ठीक हो गया. लारेब आपके कितने कंप्लीट हुए थे? आपके तो आई थिंक पेपर्स का थोड़ा इशू बना हुआ बीच में. आपके कितने हो गए थे? लारेब नदीम. Lareeb Nadeem, please tell me how much of your tasks are completed. Lareeb Nadeem, how much of your tasks are completed? Please tell me. जी जी लारेब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. लारेब नदीम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके कितने हो गए और कितने रह गए. आई थिंक आपके पेपर्स का बीच में था ना थोड़ा सा. ठीक है. ठीक है.
सो ऑल ऑफ़ यू, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है आपने बताना है, उसमें एज सच कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से कि आपको वो चीज़ जो करवानी है वो प्रॉपरली मैं बताऊँगा आपको। लास्ट टाइम भी जो सी प्लस प्लस और ऊप के इशू थे मैंने ऑलमोस्ट सब रिजॉल्व करवाए थे, ठीक है। आई रिजॉल्व योर ऑल द इश्यूज़ last time you have in your C++ and OOP as well. If you have any problem with your structure and time managing, you please discuss it with me, okay. We will resolve that, then we will move towards the next things. So before the next class you just revise your JavaScript, okay. I just share the topics with you, I just showing you the topics, what you would revise in before the next class. So I'm sharing, just a minute. Here we have W3 schools, we have a JavaScript here, so we started from variables, okay. So in start we have just syntax, how we declare the variables. Like we have three types of modern JavaScript, we have this, and older JavaScript we use the var, and in modern JavaScript we're using the let or const. Let we use in this in less cases, but const is used we more in the JavaScript as well as in our React project. So const is the most usable. So we have let, const and var, three things, okay. These three things we are using to declaring the variable, okay. JavaScript variable declare in these four ways, okay. And we use the const more other than these three, okay. So we started from here, we have let, we have const, we have var. You just read what are their scopes. The let keyword was introduced in the ES6 version of 2015, okay. The currently version we using ES6 of the JavaScript, okay. So you just read about the things, why we use that, and what are their scopes, and why we which one is readable and which one is writable, okay. And after that we use, like, there we have operators, okay. Here we have arithmetic, assignment, comparison, if conditions, loop, strings. So before the next class you just do it here, strings, okay. This is too short, I give you two short things from tutorial to strings. So these things you cover, I do a question from you. If you have any problem in these things, you just ask me in the next class. I am also sharing, this thing in your group as well, these topics. And you just cover it's gradually, part by part. And the other students, please complete their task. If anyone have any papers problem and other problems, उन्होंने मेरे से टाइम लिया हुआ है तो उनका इशू नहीं है, बाकी जिनके रह गए हैं वो अपने कंप्लीट करें और इन टॉपिक्स की तरफ स्टार्ट करें। आप लोगों ने लेट, कॉन्स्ट, वॉर के स्कोप देखने क्या होते हैं, वो क्यों यूज़ होते हैं, हम लोग कॉन्स्ट या ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्स्ट के अंदर कौन से जो सी है हमारी ये जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल को डिक्लेयर करने कौन सी चीज़ जो सी है उसका स्कोप जो सा है वो स्कोप क्या होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें कौन सा रीडेबल है कौन सा राइटेबल है। सी ओके सर, कैन आई आस्क समथिंग अबाउट लेट, कॉन्स्ट, वॉर, और आई शुड वेट नेक्स्ट वीक? You just Asma, you just learn first it by yourself, okay. It's basically using for declaring the variable of JavaScript, okay. And we have different scopes of that. You just go through it by yourself and just do some practice, okay. And after our next class is on Thursday, okay. Today is no, today is I think Tuesday, and our next class is on Thursday. And on Thursday we discuss on it in details, okay. I will uh, I will ask your question about that and we clear it properly. So that's why I giving you the very very low topics are very you can say
less topics for the next class. I think these are also almost four topics, 4 to 5. So that's why uh, we're doing the work on that, and the other students, please complete your task. And the students who have any problem about their papers, I understand their problem. And rather than this, the students who have didn't completed their task, if they have any problem, they please tell me and ask the question in the class about their about their things. As well as we have many students ask the question in the class, like we have Asma, we have Shiza Zahid, we have Rubab as well, we have Savera Yusuf as well, Sabah Zain as well. They also ask the question, and Haram also asked the question to me. So try to ask the question and be confident in yourself first. ठीक है, अपने आप में बी कॉन्फिडेंट हों और क्वेश्चन आंसरिंग किया करें। कोई ऐसा मसला नहीं है, आप उसमें मुझे चीज़ें बताएं, कोई इशू आता है तो उसको रिजॉल्व साथ ही हम करेंगे। ठीक हो गया? So we ending the today class here. You just do that things, and before the next class I just firstly describe you let const var and ask the question from you, and next we move on the other topics of JavaScript gradually and slowly. Okay Rubab, you understand all the things? Yes, sir. Okay, you have any problem Rubab? Rubab, please tell me, आपको कोई प्रॉब्लम है शुरू से लेकर अब तक किसी चीज़ के अंदर, तो प्लीज़ मुझे बताएं। नो सर, कोडिंग और इस तरह की वैसे चीज़ों में कोई इशू नहीं है। ठीक है। असल में ना जो लिंक्स वगैरह होते हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उनका भी हम्म, यूजेज जो है उसका इशू था, ठीक है। उसमें क्योंकि उसमें मैंने सु एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखी है। ठीक है, तो कोडिंग ना इस वजह से मुझे थोड़ी क्लियर है, लेकिन ना वेबसाइट का मैंने कभी किया नहीं था। ठीक है। तो उसमें उसमें ना वो उसमें ना ऐसे करेंगे, आपको जो इशू है ना लिंक के अंदर, लिंकिंग करने के अंदर, आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। ठीक है, मैं आपको ना उसकी जी सर। लिंकिंग का बताऊंगा कि कैसे लिंक करते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम है आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा ये यहाँ प्रॉब्लम आता है मुझे। ठीक है ठीक है, ये सर। आप वो जैसे वो बूटस्ट्रैप के अंदर ना, अब यहाँ पर उन्होंने जब डिव क्लास वगैरह हम यूज करते हैं तो उसमें MD6 और MD4 और MD5 वगैरह लिखा हुआ था। तो उसमें ना मार्जिन बेसिकली ज्यादा कम कहीं पर आ रहा था। ऐसे ही है। तो वो अब चेंज कर करके ना तो फिर पता चला, अदरवाइज ना वो इशू काफी कर रहा था तो लेआउट में। आप मुझे बता देती ना, मैं आपको उसका बताता कि इसको किस तरह से यूज़ करते सर हैं। वो क्या कहते हैं, चेंज कर रही थी ना तो नहीं उस नहीं वक्त नहीं, नहीं पता चला। आप मुझे ना बता दिया करो, कोई इशू नहीं है। सच है, आप मुझे क्लास में स्क्रीन शेयर कर दिया करो, मैं आपको लाइव उसमें बता दूंगा कि इसमें मसला क्या आ रहा है। कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आप कोशिश किया करो, ठीक है। ऐसा कोई इशू आ रहा हो तो मुझे क्लास में लाजमी बताया करो। कोई ऐसा मसला नहीं, उसमें बजाय के टाइम ज़ाया करो, उसको जल्दी से रिजॉल्व करो, नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव किया करो। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ना स्क्रीन शेयर कर देना, ताकि मैं उस चीज़ को फिर भी देख लूँगा, आपको बता दूंगा कि जो आपको मसला आ रहा होगा लिंकिंग के अंदर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। और सारे थैंक यू। सब के लिए यही चीज़ है। सब नेक्स्ट क्लास में कोई मसला आ रहा हो तो आप उसमें दिखाएं, मैं आपको उसमें रिजॉल्व करा दूंगा। ऑल ऑफ यू, अस्मा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइक लिंकिंग द थिंग्स एंड लिंकिंग योर प्रोजेक्ट्स, like linking your bootstrap file or any other file, you just show your screen in the next class. I will resolve the problems of all of you. Okay? सर एक और इशू आया था। Yes. वो आया था कि मैंने ना जब बूटस्ट्रैप के लिंक ऐड किए थे ना, हम्म इसी तरह जैसे आपने अभी एक लिंक बूटस्ट्रैप का सेंड किया ना नैव बार के लिए, हम्म। तो वो मैंने अलग जगह से यानी कि लेकर उसका जब लिंक हेडर में भी ऐड नहीं किया नहीं नहीं और नहीं देन नहीं, बॉडी में लिंक उसका लिंक जावास्क्रिप्ट का ऐड किया ना। वो आपने, मैं बताऊँ क्या करना। अब मैं आपको लिंक ऐड, ये जो लिंक दिया ना आपको मैंने, ये जस्ट आपने ओपन करना है। इसमें आपने जो अगर नैब बार यूज़ करना है, नैब बार का कोड उठा लेना है। लिंक एक ही पेस्ट होगा बूटस्ट्रैप का, वो एक ही दफ़ा पेस्ट होता है। ठीक है। दो लिंक नहीं पेस्ट होते क्योंकि बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन और बूटस्ट्रैप का पैकेज एक ही होता है। ठीक है, आपने ठीक है। नैब बार की, अगर आप नैब बार यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बूटस्ट्रैप के अंदर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी उसकी चीज़ यूज़ करते हैं, उसका जस्ट कोड उठाना है। एक दफ़ा हेडर में लिंक लग गया तो बस वो लग गया, बस दैट्स इट। उसके बाद लिंक नहीं लगना कोई भी। ठीक है ठीक हो गया? सर। ये जो आपने आज लिंक दिया ना, इसके अंदर यानी कि एक है जहां से मैं पहले कर रही थी ना, हाँ जी, हाँ वहां जी। पर ना जावास्क्रिप्ट का अलग से एक लिंक दिया था। तो जब ठीक है, मैंने वो पेस्ट किया तो वो दोनों में वेरिएंट इशू आ रहा वो था, वो आपका, क्रैश कर रहा वो था। उसमें ऐसे हो सकता है कि मसला ये होता है, देखिए जब जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं, जेएस का ऊपर यूज़ करके ना, उसमें हम बूटस्ट्रैप बेसिकली 4 या 5 यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि आप उसमें अपने कुछ ना बूटस्ट्रैप के पैकेजेस होते हैं, अपने एक्सटेंशंस के अंदर इंस्टॉल कर लें उसको। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा, मैं आपको रिजॉल्व करा दूंगा। जावा जो भी प्रॉब्लम हो मैं उसको रिजॉल्व करा दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है।
जी ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अस्मा आप बताएं। ओ अस्मा, यू टेल प्लीज़। Yes, I forget to ask you something. यस यस। Is about the use of icons from the Bootstrap. We have two ways. We have the one that have starting with the tag written like I, and we have SVG way. So, Okay. like, what's the difference of using them? Like, what's the Okay, I can like get more impact of using like you SVG can or I? like you can say we have the difference between SVG and other what you are saying. It's tag that start with the I, something like that. It's iframe. It's iframe. Okay. Mm-hmm. Yeah, it's icon. Yeah, it's having eye with a glass. So what's the difference of using I both of them? Like, just you if, SVG icon is just, you can say, this is the SVG. Okay, here we have like the file type, like we have PNG, we have you can say JPG, we have SVG. SVG file is, you can say, it's properly customized icon and properly without any pixel break icons, so that is called the SVGs. Okay, and I is just used for the icons, for simple icon you can using. Okay, so SVG files are properly managed by their width and fully customized pictures, that is called SVG. That we're using like PNG, we have JPG, we have one file form is dot SVG. Okay, now you understand. so like using SVG can help me maybe to customize the icon more. I can put Yes, custom yes, yes. CSS You icon. just, if you want to use SVG pictures or SVG icon, you use SVG in your public folder. So I think you didn't have any more need to customize that by its size, by its pixel. Okay. So all of you understand. So please, before the next class, do these things. If you have any problem, I will also tell you. If you have any problem, you just ask me freely, no problem. You just show your screen, I will resolve your problem in any way, no problem. If you एक्सक्यूज मी सर। yes yes. सर आई हैव सीन द गूगल आइकन्स एज वेल। अगर Okay, हम लोग उसका लिंक यूज you कर लें you use, तो आप लोग, हम लोग बेसिकली यूज़ करते होते हैं जब हम रिएक्ट में आते हैं ना, रिएक्ट के आइकन्स होते हैं अभी फ़िलहाल जो हम लोग यूज़ करते हैं, वी आल्सो यूजिंग द वेक्टर आइकन्स. ओके, we ओके using the vector icons. This is these icons are the professional icons for the website. Okay, these are the customized icon. ओके These are in the form of SVGs. ओके Okay, like this picture are in the form of SVG. These are the icons we use for from the vector icons or the react icons. Okay, ओके so these ओके things are we ठीक है using. Okay, so ठीक है ठीक है। I told you all the things. Inshallah, we ending the class here now. So before the next class, you just complete your these things. I give you very less work, and you just do it gradually. So I don't burdenize yourself in other things. So before the next class you complete these things. In next class I will resolve your other problems. If you have any your like linking problem, like you have any other problem, you just show your screen, we will resolve that. Okay, so if anyone have any other question, uh, you share the question, your problem with me on personally as well. And you also join the Slack group I shared also in the group. Okay, you also submit your all the now, from now you submit all your assignments in the Slack group. Okay, so these are the things. And for today, uh, Allah Hafiz. Then we meet in the next class inshallah. Okay.